हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। Electric field intensity at axial point was 2p by 4 pi epsilon naught r cube, and electric field intensity at equatorial point was p by 4 pi epsilon naught r cube. What will happen if the point is not on the axial or equatorial point? For example, let us take a condition in which we have a dipole minus q plus q and the point is somewhere here. Now this is not the equatorial or not the axial point, so how to find the electric field intensity at this general point P? So let us just take this point to be P, right? And this point P is at a distance r away from the center of the dipole, and the length of the dipole is as usual 12. तो हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किसके वजह से? तो इस डाइपोल की वजह से। और ये पॉइंट पी क्या कर रहा है? तो सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब कैसे इसको अप्रोच करें? तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है। अगर ये एक डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल के क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। सो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा क्या? हमारा डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट of this dipole? So we can say that the dipole moment of this dipole is P, which is equal to Q into 12. Now if this is the dipole moment P और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो कैन आई से दैट पॉइंट P, अगर हम चाहें तो इस डाइपोल मोमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कर लेते हैं हम लोग P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं एच P sin थीटा। ये P है तो इसको P cos थीटा P sin थीटा में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ P cos थीटा को हम लोग मान लेते हैं P1 और P sin थीटा को मान लेते हैं हम लोग P2। ये डाइपोल मोमेंट हो गया दो डिफरेंट डायरेक्शन में। अब बात करें तो अगर ये P1 है हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, हमारा डाइपोल मोमेंट P1 है। ठीक है, so can I say that the point P is lying on the axial position, और एक्सियल पोजीशन पे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E1। P1 डाइपोल मोमेंट की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग E1, जो कि एक्सियल P1 के एक्सियल पोजीशन पे हो रहा है। सिमिलरली जब हम P2 की बात करते हैं, P2 डाइपोल मोमेंट, तो ये डाइपोल हो गया और ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो गया। और अगर ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? सो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम वैल्यू मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू बी दिस टू बी E2। ठीक है, पिछले केस में हमने देखा था अगर ये हमारा एक डाइपोल है, हम लोगों ने प्लस क्यू माइनस क्यू लिया था
विद लेंथ 2l, तो अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर था, टुवर्ड्स द माइनस चार्ज। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमेशा माइनस चार्ज की तरफ ही होता है। इफ दिस इज टू माइनस चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन दिस डायरेक्शन। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, तो एक हो गया E1, एक हो गया E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी समवेयर हियर, दैट विल बी E. So we have to find that value of E because of this dipole. Now, so what we can say that if P is the dipole moment, if P is the dipole moment of dipole, then point P lies on the axial position of dipole moment P1 and equatorial position of dipole moment P2। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर ये P1 है, अगर ये P1 है, अगर ये P1 है तो P1 के एक्सियल पोजीशन पे है हमारा पॉइंट P, और ये P2 है तो P2 के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, सो electric field intensity E1 will be equal to 2P1 by 4 pi epsilon naught R cube। जहाँ पे P1 क्या है, तो P1 है डाइपोल मोमेंट along axial position। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या जाएगा, तो 2 P1 का वैल्यू क्या था, तो P1 का वैल्यू हमारा आया हुआ था P1 इक्वल टू था हमारा P cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2P cos थीटा बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E1 का वैल्यू एक्सियल पोजीशन की तरफ। सिमिलरली E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो E2 का वैल्यू हो जाएगा P2 बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब यहाँ पे P2 क्या है, तो P2 है डाइपोल मोमेंट along equatorial position। ठीक, ये हो गया इक्वेशन, सॉरी दैट का मेथड P2 को क्या आया था, P sin थीटा बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये हो गया हमारा वैल्यू E2 का, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सो what is the value of net electric field intensity E? So E can be written as net electric field intensity E equal to E1 plus E2, and as E1 and E2 और E2 क्या है, तो E1 और E2 हमारा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वेक्टर लॉ यूज करेंगे, तो वेक्टर लॉ में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। एज थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। नाउ E1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो E1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो E1 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2P cos थीटा बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर प्लस P sin थीटा बाई 4 pi एप्सिलॉन नॉट R क्यूब का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, अब
यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, तो 1/4 आर क्यूब ए और पी, ये वैल्यू हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, p बाई 4πε0 आर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, that can be written as p by 4πε0 r cube root under 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. That can be written as p by 4πε0 r cube root under cos square theta plus sin square theta equal to 1, तो 1 plus 3 cos square theta. That is the value of net electric field intensity at any general point due to a short electric dipole. Fine. Now, इसमें हम कुछ स्पेशल केस ले सकते हैं। तो क्या स्पेशल केस हो सकता है? तो स्पेशल केस में पहला हम केस ले सकते हैं when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब हम थीटा को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, लेट अस सी द डायग्राम। व्हेन वी आर कंसीडरिंग थीटा टू बी 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, ये तो एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा हमारा। सो व्हेन वी कंसीडर थीटा टू बी 0 डिग्री, दैट पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द एक्सियल पॉइंट, और उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे ई एक्सियल, और ई एक्सियल हो जाएगा p बाई 4πε0 आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos 0 इक्वल टू 1, that is equal to 4, that is equal to 2p बाई 4πε0 आर क्यूब। तो ये थीटा 0 मतलब एक्सियल पोजीशन को गया, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या गया था, 2p बाई 4πε0 आर क्यूब। ठीक है, similarly case 2, when theta is taken to be 90 degree, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, हमारा e इक्वल टू क्या है, e इक्वल टू था p बाई 4πε0 आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा p बाई 4πε0 आर क्यूब, और ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर? सो by using this we can find the value of electric field intensity on the axial as well as the equatorial position. ठीक है, तो हमारे पास या तो वो दो तरीके हैं एक्सियल पोजीशन के और इक्वेटोरियल पोजीशन के, या हम इसके हेल्प से भी हम इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको दोनों मेथड याद नहीं करना है तो सिंपली हम ये मेथड याद कर लेंगे, इससे हमारा जनरल पॉइंट का भी निकल जाएगा, एक्सियल पॉइंट का भी निकल जाएगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, now let's move to the next topic. Our next topic is electric dipole. Placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड विद इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the value of electric field is E. Within this uniform electric field, let us consider a dipole is placed. The dipole is placed minus Q plus Q, and the dipole is considered to be AB.
the length of the dipole is taken to be 2L. So we have a dipole whose length is 2L, dipole AB, having charge minus q plus q, and the electric field E, whose direction is from left to right. The electric field is uniform. Now, this is a positive charge, this is a negative charge, और क्योंकि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट है, तो द प्लस चार्ज क्या होगा, तो प्लस चार्ज रिपेल करेगा. प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ. तो ये प्लस से माइनस यानी ये प्लस इधर साइड लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट साइड माइनस होगा. तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. प्लस से माइनस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो लेफ्ट साइड में प्लस होगा, राइट साइड में माइनस होगा. तो द प्लस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. So what will be the force? So as we know electric field E equal to F by Q, force by charge. तो F equal to क्या आ जाएगा, तो Q into E. So this charge which will experience a force F, that should be equal to Q into E, and this is the direction of force experienced by the charge particle. When we come to the negative charge, towards left side there must be some positive charge, and right side must be some negative charge. So this charge will experience a force towards left direction, and the value of this force should be again F equal to Q into E. Now what we can see that the dipole is experiencing two forces. One is QE that will experience towards left to right, and another is again QE which will experience from right to left. So both the charges are experiencing the same force. Magnitude is same, but the direction is opposite. And as these forces are not acting on the same straight line, the dipole is going to experience a torque, which we have studied in the class 11. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा है बट डायरेक्शन उसका अपोजिट है, तो वो ऑब्जेक्ट एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. जब एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा, एंड दिस डाइपोल विल ट्राई टू रोटेट इटसेल्फ, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्योंकि ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. So a torque will experienced by the dipole. So simply this topic deals with the torque experienced by a dipole which is placed in uniform electric field. Okay. Now if the length of the dipole is 2L, what is the perpendicular distance? Between the dipole? So if this angle is taken to be theta, so we can say that the distance between the two charges, perpendicular distance, will be equal to 2L sine theta. That will be the perpendicular distance between the two charges. Okay. Now we can write it. Both the charges are experiencing a force equal to QE. As both the forces are equal in magnitude, but opposite in direction, and line of action of the force is not in the same straight line,
same straight line, or torque will be experienced, by the dipole. And what we know, the torque experienced can be written as magnitude of either force into perpendicular distance between the force. So the torque will be equal to magnitude of either force के बीच का magnitude क्या आ गया था, q into e force हो गया magnitude का, and perpendicular distance क्या आ जाएगा था, 2l sin theta, which we have already discussed. So that can be written as q into 2l into e sin theta. Q into 2l is written as P and E sin theta, or that can be written as P vector cross E vector. So if a dipole is in uniform electric field, placed in uniform electric field, making some angle with the electric field, the dipole is surely going to experience a force, and the magnitude of this force is given as P cross E. That is the torque acting on the dipole. So this is the case of torque acting on a dipole which is placed in uniform magnetic field. Fine. In the next class we are going to discuss some numerical problems based on this chapter. Then we are going to move in the next topic.